A very good morning to all my dear students. Today we are back with science class. This is Gayatri Sharma. Welcome you. So students, in this class, today class we are going to do new words of chapter 5. New word of chapter 5. The name of the chapter is birds. So today our new words are related to birds. So let's start. Our first word is weak. V-E-A-K, weak. Weak is the part of a hard part of a bird's mouth. The hard pointed or curved outer part of a bird's mouth. अब जो वीक है वो क्या है? वीक मीन चोंच, जिसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज वीक ऑफ अ वर्ड. द बर्ड पॉइंटेड, द हार्ड पॉइंटेड और कर्व्ड आउटर पार्ट ऑफ अ बर्ड माउथ. जो उस बर्ड के मुंह का सबसे जो हार्ड पार्ट है, नुकीला और हार्ड जो पार्ट है वो क्या है? उसके वीक है. द हार्ड पॉइंटेड और कर्व्ड, कर्व्ड में थोड़ा घुमावदार, जो थोड़ा सा कर्व्ड हो, घुमावदार हो, दैट इज कॉल्ड वीक. तो वीक क्या है? द हार्ड पॉइंटेड और कर्व्ड आउटर पार्ट ऑफ अ bird's mouth. Different birds have different type of beaks based on their feeding habit. They have strong and pointed beak. Some have short and hard curved beak. Some have broad, flat and hooked beak. So birds have different beak. The beak is the hard pointed or curved outer part of a bird's mouth. So our next new word is feather. Feathers, soft and light parts that cover the body of birds. बर्ड क्या है? सबसे जो बर्ड की बॉडी का सबसे जो सॉफ्ट पार्ट है, दैट इज feather. Soft and light parts that cover the body of bird. अब बॉडी, जो पूरी बॉडी को कवर करता है, सबसे सॉफ्ट और लाइट जो पार्ट है बर्ड की बॉडी का, दैट इज feather. That is feather. So students, as you know that birds have 3 types of feather: down feather, flight feather and contour feather. So birds look beautiful due to their feather. So feather is the soft and light parts that cover the body of the bird. Next new word is P-E-C-K, peck. Peck means to move the beak forward quickly and hit or bite something. That means to eat or bite something with its beak. The next is claw. Claw means one of the sharp curved nail. Sharp curved nail on the end of an animal's or a bird's foot. जो बर्ड्स और एनिमल्स के फुट हैं, उनका जो सबसे शार्प और कर्वर्ड जो नेल्स हैं वो क्या है? क्लास. उनको क्या बोलते हैं? क्लास. वन ऑफ द शार्प कर्वर्ड नेल्स ऑन द एंड ऑफ एन एनिमल्स और अ बर्ड्स फुट, दैट इज कॉल्ड क्ला. क्लास मीन्स पंजे, जो क्या होते हैं? शार्प और कर्वर्ड नेल्स होते हैं. कहाँ पर होते हैं? एट द एंड ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स फुट. देखिए ये फुट है बर्ड का, और इसके एंड के अंदर जो है, जो कर्वर्ड है, शार्प हैं, तीखे हैं, नेल्स हैं, जो वो क्या होते हैं? क्लास. Some birds like eagle, vultures have claws. They use their claws to hold their prey. वो अपने जो प्रे होता है, उनका जो शिकार होता है, उसको होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए वो किसका यूज़ करते हैं? क्लॉज का यूज़ करते हैं. तो ईगल एंड वल्चर है क्लॉज. The next is webbed feet. Webbed feet means fingers or toes connected by a web or a
मेम्ब्रेन्स। अब ये जो बीच का है ये क्या है हमारा, ये फीट क्या है, दिस इज वेब्ड फीट। और ये जो बीच में है इनके जो टॉज हैं, फिंगर्स हैं, उनके जो बीच का जो पार्ट है दैट इज मेम्ब्रेन, दैट इज मेम्ब्रेन और वेब। द फिंगर और टॉस जिस मेम्ब्रेन और वेब से फिंगर और टॉस जो कनेक्टेड रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेब फीट बोलते हैं। उस वैसे फीट को क्या बोलते हैं, वेब फीट बोलते हैं। तो विच वेब बर्ड्स हैव वेब्ड फीट? Birds that swim in the water have webbed feet, like duck, swim have webbed feet because they help them to swim in the water. So duck and swam have webbed feet. Then hollow means having empty space inside, यानी कि होलो मीन्स खोखले, जो खाली हो, बीच में से खाली हो, दैट इज होलो। तो वो क्या करते हैं, जो बर्ड्स है होलो बोन्स, दे हेल्प देम टू फ्लाई। वो उसकी किस में हेल्प करते हैं, फ्लाई करने के अंदर हेल्प करते हैं। तो हैविंग एम्प्टी स्पेस इनसाइड, दैट इज कॉल्ड होलो। वीड्स मीन एन अनवांटेड प्लांट विद अ विगोरियस ग्रोथ रेट। अनवांटेड मीन जो घास फूस उग जाता है जिसको हम नहीं चाहते हैं, जिसके कारण जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, उसको क्या बोलते हैं, वीड्स। तो एन अनवांटेड प्लांट विद अ विगोरियस ग्रोथ रेट इज कॉल्ड वीड्स। नाउ लेट्स रिवाइज अगेन। फर्स्ट इज PEVEAK, वीक, द हार्ड पॉइंटेड और curved outer part of a bird's mouth. Then feathers, soft and light part that cover the body of birds. Peck means to eat or bite something with its beak. Claws, one of the sharp curved nails on the end of an animal's or a bird's foot. So eagle and vulture have hooked claws. Then webbed feet, fingers or toes connected by a web or a membrane. Membrane, like birds like duck and swan have webbed feet that help them to swim in the water. Hollow, birds have hollow bones. Hollow means having empty space inside, अंदर से जिनके space हो, that is hollow. Weeds, an unwanted plant with a vigorous growth rate. An unwanted plant with a vigorous growth rate. So students, that's all. This is your new words. Today your homework is that you will read these new words and you will write it in your notebook. That's all students. Thanks for watching this video. Have a nice day.